Sarvapadamayam Jagati Swapadantikam Vandeham Shri Yoshivadapadakuntam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sarvajatam Sadhana Raghunatham Vitantam Sarivam Sarvetam Sarvadatam Parijanasatam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Radha Sahibana Lalita Shri Vishwanatamshi Krishna Bala Krishna Vistayatale Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Namaste Saraswati Gosvami Vijayashim Nandi Vaishya Pradeshitarim हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावने श्री कृष्ण सरस्वती देवी गौरांगे हरि प्रिय वंशा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु श्री गीतानाम भवानी वैष्णव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। Okay, so we are starting from the second chapter, the goal of yoga. Am I audible, Udit? Yes, Prabhuji, you are audible. Okay. So second chapter, goal of yoga. In the Bhagavad Gita, the Sanskrit word "mam" is frequently used. This word means "unto me." Krishna, the Supreme Personality of Godhead, says, "Unto me," Krishna. We cannot interpret this in a different way. When I say, "Bring me a glass of water," it means that I am the person in want of the glass of water. And if you supply to me and not to others, then it is right. When Krishna says unto me, that means Krishna. But philosophers are still interpreting, they say unto something else. Even grammatically, this is wrong. Yes, Prabhuji. One who has developed attachment to Krishna is Krishna conscious. They say if you have attachment for your lover, you are always think of her. That is lover consciousness. It is natural. It is stated that a woman who has another lover besides her husband shows herself very attentive to her household duties, but is always thinking, when shall my lover and I meet in the night? This is an example. It is possible, in spite of our false engagement, if we love somebody, to think of him always. If materially it is possible, why not spiritually? That is the whole teaching of the Bhagavad Gita. In the Gita, Krishna says to Arjuna, as a fighter, you have to fight. You cannot step away from the fighting. It is your duty. Nowadays, I have practical experience that the draft board of your country is calling for boys to join the army, but they are not willing. They are not willing because they are not trained as Kshatriyas, warriors. They are trained as Shudras, laborers. Therefore, the caste system is very scientific. A section of people should be trained as Brahmanas, men of knowledge. Those who are intelligent enough in the society should be picked and trained in higher philosophical science. And those who are less intelligent than the Brahmana should be given military training. We require everything in society, not only military men. How can everyone be military men? Because they are sending Sudras, ordinary workers to Vietnam. These are unnecessarily being killed. Any country which is very proud of scientific advancement and yet does not know how to organize its society is a full society. I guess Deepak Prabhu also joined. Deepak, okay. Yeah, Deepak, Yeah, okay, Prabhuji. In the Bhagavad Gita, Krishna says that there are 4 divisions of society: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. That is natural. Some are inclined toward spiritual advancement, and these are Brahmanas. Now we are training boys who are spiritually inclined, and they are unnecessarily being forced into military service. The foolish have no knowledge that some boy is being trained up in higher science. Why should he be destroyed when he is being perfected? The intellectual person, those boys who have Brahminical qualification, are being rested in brahmacharya, student life. They don't take to meat eating. They don't take part in intoxication. They don't take part in gambling. They don't take part in illicit sex. They are being trained as complete brahmanas, the highest intellectuals, the most purified person in society.
If there is one Brahman in a whole family, then the whole family, the whole society becomes sanctified. But today they have no knowledge of how to train a Brahman or how to train a Kshatriya. In the other field of actions, in the work of Shudras and Vaisyas, there is nice training. If anyone wants to be a businessman, there are college or technological schools. That's very nice. But why should everyone be dragged into technology? Just as in your body, for proper maintenance, we require the head, the arm, the belly, and the legs. All these parts of the body are required. You cannot say we do not require the head. That is nonsense. We require everything. Suppose there is a body without a head, it is a dead body. If the body is now intact but there is no head, it is called a dead body. The body is considered to be the intellectual part of the body. Sorry, the head is considered to be the intellectual part of the body. Similarly, if there is no Brahman in the society, it is a dead body. If there is no spiritual man in the society, it is a dead society. Therefore, Krishna says, I've created the fourth division of society according to the quality and work. If someone is working as a brahmachari brahmana and has acquired the quality of understanding Krishna, the Supreme Lord, then why should be called an army action? The arm of the body is the Kshatriya. Of course, the arm of the body is Kshatriya. Of course, that is required to protect the country, to protect the society. A military arrangement should be there. No one, no one will disapprove, but not the Brahmanas. It is putting a race horse before the workout. A race horse is required for a different purposes. The other beasts of burden, asses, mules, and oxen are required for pulling carts. Hare Krishna Prabhu. I say this frankly, everyone may read it, that any society where there is no spiritual persons or Krishna consciousness is a rascal society because it has no head. Where there is a headless man, there is a dead body. And if there is no brain, there is no head. If the brain is not working properly, then he is a madman. If he has no head at all, then he is a dead man. You can read, Swati. Do you think that in a dead society or a mad society there can be any peace? No. If the society is full of madmen, then where is the question of peace? Therefore, Krishna consciousness is most important to study in present day society. The men who are leading the society, the president and the secretary of defense, should have the intelligence to understand the science of the soul. Okay. Kanak Mataji, are you there? The other day, when coming to your country, I met a secretary of the Japanese government in Tokyo. I wanted to explain to him that he should cooperate with this movement, but he said, "Oh, we cannot cooperate with any religious movement." He is one of the chief secretaries of the government, and he is such a fool. He is taking this movement as a religious movement, just as we have so many sentimental religions. But this is not sentimental, this is the necessity of the society. A class of men should be Krishna conscious. Otherwise, the society is doomed. It is going to hell. And when such rascals are at the head of the government, how can there be peace? How can you expect peace in a dog society? The dogs are by nature howling woof, woof, woof as soon as they see other dogs. So, do you mean to say there will be peace if you turn human society into dog society, into cat society, into tiger society? The tiger is very powerful. He can kill many other animals. But does that mean he is very important animal? No.
He has no use in society, and now we are very powerful, and we have good weapons to fight with, and we can kill many people. But these are no qualifications for good men or a good society. Hare Krishna. Hare Krishna. We are not meant to manufacture a society of monkeys or tigers or asses or rascals who work very hard. Do you mean to say a society of asses will derive any benefit from life? No. Yes, Udit. In the Gita, Krishna says, No. For those. for those who have developed an attraction to Krishna, attachment can be developed. Before my coming to the West, there was no movement like the Krishna consciousness, but now it is developing. Krishna was not born in your country. You do not accept Krishna as a religious god, but Krishna is so attractive that although you are a foreigner, you are not foreign. You are not foreign. To Krishna, you are not a foreigner. He claims everybody. We make him foreign. But this is our foolishness. In the Gita, Krishna says, "My dear Arjuna, there are many different forms and different species of life, undoubtedly, but I am their father. Aham Bij Prajakta." Just see how Krishna is universal. He's claiming not only human society, but animal society, bird society, beast society, everyone. He says, I am the father. So how can Krishna be foreign? It is a mental concoction. They say Krishna is Indian or Krishna is worshipped by the Hindus and therefore he is one of the Hindu gods. And they think that Krishna is saying, yes, I am the Hindu god. Yes, I am Indian, but he's like the sun. Why American sun or Indian? Nothing is an American or Indian. That is all artificial. This planet belongs to the humans. That's all. This is your communism. This present communism is defective because the Russian says that Russia is for the Russians or China is for the Chinese. Why not for others? Just think in terms of human communism. Why human communism? Living being communism. Living being communism. If you take this world as belonging to human society, that is defective. It belongs to everyone. It belongs to the tree community. It belongs to the beast community. They also have a right to live. Why should you cut the trees? Why should you send the bulls to the slaughterhouse? This is injustice. How can you gain justice by yourself doing injustice? We have no Krishna consciousness. We do not know that Krishna is our original father and that we are all his sons. The tree is my brother. The tree is my brother. Uh, where And it is. and The the end ant is is and the ant is my brother. The bull is my brother. The American is my brother. The Indian is my brother. The Chinese is my brother. Therefore, we have to develop Krishna consciousness. We talk all this nonsense of universal brotherhood and United Nations. All nonsense. Either you acknowledge a father or else you have no idea of how to realize brotherhood or humanity. Therefore, they are taking for years and years. They are the same. They are the same fools. Can't you see the United Nations? They have headquarters in New York. They are simply talking nonsense. That's all. That is their business. So unless there is full Krishna consciousness, there cannot be any improvement of the world condition. Krishna says that you have to develop your attachment for him. Begin at the beginning, but you cannot do it. you can do it. It is not an you can do it, sorry. It is not artificial. I have a few sincere students here, just developing. They are not complete, but they are developing Krishna's attachment. Otherwise, why should they waste their time chanting Hare Krishna? They are doing it and it can be done. You can develop love for anything if you try for it. But Krishna development is very natural because Krishna is not think belonging to a particular type of religion or sect. Krishna claims, I belong to everyone. Therefore, originally we are all connected with Krishna, but we have simply forgotten. This process of chanting is to invoke your remembrance of Krishna. It is not that we are inducting something artificially into you. No, Krishna is already connected with you, but you have forgotten. And we are trying to give you the process for reviving your original consciousness. So you can come to our temple,
That is the beginning. You can see the Krishna or Krishna's devotee, and you can chant Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Anshata. Krishna is not different from his name because he is absolute. He is non-different from his words. The name Krishna and the person Krishna are not different because everything is Krishna. Yeah. Oneness, So, the philosophy of monism or pantheism is imperfect. When that oneness comes in understanding Krishna, that is perfection. If Krishna is the supreme absolute truth from whom everything is emanating, then everything is Krishna. Just as you have a gold mine and are preparing so many golden utensils and ornaments and many other things, but they are all gold because the original is gold. You name it earring, but you have to add gold, golden earring. You may name it necklace, but it is gold because originally it came from the gold mine. Similarly, originally everything is coming from Krishna. If he is supreme, the absolute truth, then nothing is different from him. Just as whether you say carrying or necklace or bangle or wristwatch, these are all made of gold, and so they are gold. But at the same time, you cannot say this is all gold. You must say this is a gold necklace, this is a gold. hearing. Sorry, that this is all gold. You must say this is a gold necklace, this is gold carrying. The Mayavadis or impersonalities will say that everything is Brahman, but everything is Brahman is not right. This is very nice explained in the Gita in the 13th chapter. I am expanded all over. That is my impersonal feature. Krishna is everywhere in his impersonal feature, but still he is a person. The Mayavad philosopher thinks that if Krishna has become everything, then where is the possibility of Krishna here, a part? This is complete rascaldom because it is thinking in a material way. There is no spiritual knowledge. Yes, Guruji. ये लास्ट लाइन का ये इसका मीनिंग समझ नहीं आया सेकंड ये द मायावादी फिलोसोफर थिंक दैट इज द क्वेश्चन If Krishna has become everything, then where is the possibility of Krishna here apart? यस यस हाँ ये थोड़ा सा मुझे वो लगा मतलब मायावादी जो है वो ये सोचते तो हैं कि पहले तो बता जाए कृष्णा जो है वो इम्पर्सनल है मतलब एवरीवेयर है पर उनका परमात्मा फीचर को सब कुछ मानते हैं फिर वो बोल रहे हैं कि if Krishna has become everything then there is a possibility of Krishna here तो मतलब मायावादी ऐसा मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग में बाकी करेक्ट कर सकते हैं मतलब मायावादी फिलोसफर मान रहे हैं कि अगर कृष्णा हर जगह है वो ओमनी प्रेजेंट फीचर को सब कुछ मान रहे हैं तो फिर भगवान के पर्सनल को क्यों मानेंगे मतलब वेयर इज कृष्णा हियर मतलब एक प्लेस पर कृष्णा को कैसे देख सकते हैं अच्छा जैसे हवा को अगर मैं बोल दूं कि हवा है जैसे लेट्स से गॉड व्हाट इज गॉड इज लाइक एयर एवरीवेयर तो मैं एक पर्सन की तरह फिर एयर को नहीं देख पाऊंगा इस बात को ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि बात को ऐसा कहना चाह रहा है यही लग रहा है ये तो लिमिटेशन होगी ना अपने माइंड से आप कुछ भी लिमिट कर रहे हो हाँ इसलिए शायद रिकॉर्ड कह रहे हैं कि दिस इज कंप्लीट अस्कल्टन बिकॉज़ इट इज टेकिंग इन मटेरियल सेंस में कि आप उसे अगर आप उसे ये बोल रहे कि वो ओमनी प्रेजेंट है तो भी आप उसे लिमिट कर दिए इसका मतलब कि आप वो पर्सनल हो ही नहीं सकता है तो मटेरियल में हो गया मटेरियल में नहीं होता ना कि फॉर्म एक लिमिटेड वे में रहती है In the material way, suppose you take a piece of paper and bear it into particles and throw it all over. The original paper has no existence. This is material, but we get information from the Vedas about the absolute truth is so perfect that if you take away the whole, still the whole remains. 1 minus 1 equals 1. The material way of thinking is 1 minus 1 equals 0. But spiritually it is not like that. Spiritually 1 minus 1 equals 1 and 1 plus 1 equals 1 also. Okay. और इसे कैसे कोई समझेगा बताओ कितना अलग है थोड़ा सा ये है ना yes 9 Krishna is the Mayavadis, the impersonalists see our deeds here and say,
Oh, they have installed some wooden forms and they are worshipping them as God. But one who knows Krishna science understands that Krishna is everything and therefore can appear in everything. With electricity, the current is everywhere along the line. So wherever you touch, you will feel it. Similarly, the Krishna current in his impersonal form is everywhere, and it is the technician who knows how to use the force. Before we have a phone installed, we have a telephone conversation, and we simply inform the person before we even talk money. Hold on. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सेंटेंस. Yeah, before we have a phone installed, we have a telephone conversation. हाँ, तो मतलब उसको फोन करके बोलेंगे कि भैया इंस्टॉल कर दो इसे. We simply inform the person before we even talk money. कितने पैसे लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे. That he should come immediately to find out where the connection can be made. ठीक है ना? Yeah. पहले वही सिस्टम था ना, वो लैंडलाइन की बात हो रही है एक्चुअली. अब तो जाके सिम खरीद लेंगे. नहीं हुआ तो बात कैसे कर रहे हैं? हाँ, वो भी है कि वो, हाँ, मतलब कोई और माध्यम बनाया गया है बात करने का, इसका मतलब. वो probably you have one line already. हाँ. You got it right. You got the meaning right. Yeah. And he comes up to work, and we do not know this because he knows the technique. So one must know how to connect with Krishna. Krishna is everywhere. This is Krishna consciousness. One must know how he can drive Krishna from the features of Krishna's form in wood or iron or metal. मेरे ख्याल से वो चैंटिंग को ही प्रभुपाद यहाँ ब्रिंग आउट कर रहे हैं कि मतलब पहले चैंटिंग के माध्यम से we start requesting Krishna to come in our heart, and then Krishna gets installed in our heart. It's like right. Okay. Deepak. Yes, Roji. You have to learn how to contact Krishna everywhere and everything. That is explained in the system of yoga. Krishna consciousness is also yoga, the perfect yoga, the highest of all yoga systems. A yogi may come and we can challenge him, saying that this is the topmost yoga system. Though it at the same time it is very simple. You don't have to exercise your body over a period of weeks before you feel some power. But in Krishna consciousness, you won't feel tired. All of our students are simply anxious to be overloaded with work in Krishna consciousness. Prabhupada, what can I do? And they are actually doing it. In the material world, if you work for some time, you will feel weak. Of course, I'm not exercising myself. I'm an old man of 72 years. I was ill. I went back to India. But I want to work. Actually, I could retire from all these activities, but as far as I can, I want to work. I want to learn day and night. At night, I will work with the dictaphone, and I'm sorry if I cannot work. This is Krishna consciousness. One must be very anxious to work. It is not an ideal society. We have sufficient engagements, editing papers, selling papers. Yeah, Anshuman. Simply find out how Krishna conscious you can be. If you want to be really at peace, if you want to be happy, then develop Krishna consciousness. And the beginning is to develop attachment for Krishna. The process which we have prescribed is chanting and dancing before the deities and offering prasadam, spiritual food. This will make you more Krishna conscious. The yoga system, as it is described in the Bhagavad Gita, is different from the bogus yoga system which is going on in the West these days. The yoga systems which have been introduced into the West by so-called yogis are not bona fide. Yoga is difficult. The first thing is to control the senses. That is the position of the yogi. He is not allowed to indulge in sex life. If you indulge in intoxication, if you indulge in meat eating, and if you indulge in gambling and sporting, all nonsense. You cannot at the same time become a yogi. I was astonished when a yogi came here having advertised in India that you can be a yogi even though you may be addicted to drinking. This is not the yoga system. This is not a standard. You can call it yoga, but it is not the standard yoga system. Okay, so we'll stop now. We'll take some time for the discussion.
Yes, Isha Prabhu. We'll start from you. Probably there are a lot many things Prabhupada is talking in this chapter, Yeah. starting from one ashram, Yeah. and why it is important in the society. And actually people are following, बस ये है कि वो accept नहीं कर पा रहे कि हम वन आश्रम में हैं. और प्लस उसमें डिसएडवांटेज, मतलब प्रभुपाद स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे कि हाउ टू क्लासेस ऑफ द मेन आर नॉट गेटिंग ट्रेनिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. फर्स्ट द ब्राह्मणास एंड सेकंड द क्षत्रियास. Actually, what Kshatriya has a work, they are not doing. Only army person is fighting for the boundaries and the walls, and nothing more than that. In society, we have many things which is going wrong, and nobody is talking about it. So actually, there is no Kshatriya existing in society, and who is talking about those wrongs? Take it as a cow slaughtering and mob lynching. People are getting killed just like anything, and plus again, then how peace can be established? Prabhupada is giving that practical example too, that you have to consider someone your father until the superior, topmost superior. Until unless you do not consider anyone to it, to that thought of peace, or peace, do not have a correct word to use, but the meaning Prabhupada is trying to say is that we have to consider someone superior, as United States is trying to regulate all the rules and regulations, but they fail because they do not have proper goal or intention maybe behind it. They are doing business over there. So if we have Krishna as supreme, or if you consider someone supreme, you can be in a mode of serving, and you can consider other people as a servant of the same person. So there is brotherhood, humanity in the society. You do not get jealous by each other because everyone is working for the same person, either in this way or in that way. So there's not understanding on that level of brotherhood and prosperity and humanity. Again, Prabhupada is establishing by Krishna is supreme. Is giving all of the examples that that he is supreme, and he is also dispelling the Mayavad statements, right? How if Mayavad says that Krishna कैसे आ सकते हैं, इधर कैसे नहीं आ सकते हैं. So Prabhupada is giving example of that Purnam is an example of that shloka, that 1 minus 1 is also 1, and in spirituality, and so there's many forms and many activities by Krishna that it does not, मतलब उनसे कुछ कम नहीं होता है, मतलब जो भी होता है सब बढ़ते ही जाता है कृष्णा से. That is the point. Yeah. And even in the spiritual progress we see that if we do little things we get more out of it. मतलब जितना सोचा नहीं होता उससे डबल ही मिलता है spirituality में. Maybe it peace or anything you're finding. Yeah. So now we are studying the yoga system. Let's see how it takes. How it Thank you, goes. Shabu. Thank you. Yes, Aditya. Yes, Prabhuji. Prabhuji, Prabhupada ने बहुत मतलब वो easy way बताया कि how to remember Krishna. Yeah. So we can practice that. Maybe it is difficult in the beginning, लेकिन अगर हम इसे practice करेंगे ना कि whatever we are doing, just remember Krishna in everything. तो मेरे को लगता है कि अगर हम daily practice करेंगे तो at some point it will happen कि it will give you the immense and the best pleasure in this material world if we can remember Krishna in every state of life. And दूसरा मेरे को जो समझ आया कि मतलब according to this law of land, wherever मतलब जहाँ भी आप जाओ पूरे वर्ल्ड में, जो भी मतलब whatever consists of this material or spiritual world, everything is of Krishna, everything is because of Krishna. So जो हम religious religion के basis पे division कर देते हैं ना, तो I think Krishna consciousness is beyond that. कि जो धर्म के आधार पे नहीं है, it is beyond the religion. Actually, this is the dharma of every living being in this world, where it is human or animal. So Krishna is omnipresent. Krishna is everywhere. So I think this mindset is good for preaching also. कभी कभी हम
ऐसा हो जाता है कि ये सनातनी है, सनातनी मतलब हिंदुइज्म है। बट अगर मतलब प्रभुपाद का फिलॉसफी इस चीज में बहुत क्लियर था, और वो इस बात का वो बार बार खंडन किए कि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर हम धर्म से इसे कर देते हैं, मतलब किसी रिलीजन से रिलेट कर देते हैं, तो ये हम इसे लिमिट कर रहे हैं। बट Yeah. द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लिमिटलेस, और अगर वो हमारे एटीट्यूड में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं ना वो मतलब कहीं ना कहीं वो जो एज इट इज हमें इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करना है उसमें वो बाधा बनेगा, मतलब एज एक्ट एज अ बैरियर। Yeah. तो हमें अपनी वी नीड टू इम्प्रूव आवर मेंटेलिटी। सो मेरे को लगता है कि इससे फिर ऑटोमेटिकली ना मतलब आप दूसरे बंदे के लिए आपके अंदर हेट्रेड कम हो सकता है, और उसके लिए थोड़ा हीन भावना, प्यार की भावना ज्यादा, लव केयर अटैचमेंट ज्यादा आएगा अगर हम इस तरीके से सोचेंगे। ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Yes, right. Thank you, Deepak. थैंक यू। Nice points. Yes, Deepak bro. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. तो एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद जी का, जो मैं फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मतलब इफ देयर इज नो हेड देन इट इज अ डेड बॉडी। तो प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि कैसे ब्राह्मण और वैष्णव क्यों जरूरी है इस वर्ल्ड में, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल भी दे रहे थे हमारे बॉडी का, कि अगर हाथ और पैर सब सही, तब तक सही सलामत नहीं चलते, तब तक बॉडी को फुल्ली अच्छे से हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये सही है ना गुरु जी। इस तरह से मतलब क्यों हमें ब्राह्मण की जरूरत है, मतलब हम ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब ये इन सब की क्या जरूरत है। तो हम प्रभुपा जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जैसे कि हमारी बॉडी रहती है, तो अगर एक चीज ना हो तो फिर क्या हो, हम कैसे हमारी बॉडी, फिर हम उसको वो बोल देते हैं ना कि PWD मतलब क्या होता है, पर्सनल डिसेबिलिटी, या तो ऐसा कुछ बोल देना। तो परफेक्ट नहीं हो सकता, और परफेक्ट सिर्फ तभी हो सकते हैं जब सारी चीजें अच्छे से काम कर रही हैं। मतलब हेड ही नहीं है तो फिर क्या है, बेकार है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। ये इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में भी अप्लाई होता है, इस्कॉन में भी। ये ऐसा नहीं है अगर कहीं यहाँ भी लड़ाई हो रही है, हम लोग भी देख रहे हैं ना, प्रचार वैसे ही हो रहा है कि बस 16 माला करो फॉर एवरीडे दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है, हमें भी और ब्राह्मणिकल डिवोटीज डेवलप करने पड़ेंगे, जो शास्त्रिक हैं, जो मैनेज करना जानते हैं चीजों को, वरना यही हो लड़ाई हो रही है। तो ये हर जगह एप्लीकेबल है नहीं? यस यस ब्रो जी, इवन जैसे आपने बताया कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर चीज जरूरी है, जैसे मतलब जो भी भक्ति के अंग हैं वो इक्वली हमको ध्यान देना सब पर, है ना। ये नहीं कि बस ये कर लिया वो छोड़ दिया। तो ये भी इससे हम ये भी समझ सकते हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट ब्रो जी, थैंक यू। ओके, अंशु बताइए। प्रोजेक्ट बीच में एक प्रभुपाद जी का एक पॉइंट आया था जिसमें वो बता रहे हैं कि जो कृष्णा है वो मतलब वो मतलब एवरीथिंग इज कृष्णा एंड नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हिम। उसमें वो प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि वो गोल्ड माइन वाला, यस यस यस, कि वो गोल्ड से हम कितना ही कुछ बना ले, वो अल्टीमेटली गोल्ड तो माइन। गोल्ड से आया है, सही बात है। राइट पॉइंट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। ओके, कनक माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे वो वाला पॉइंट अच्छा लगा, मतलब जो चीज मैं अपने आप से कनेक्ट कर पाती हूँ ना, मुझे वो ज्यादा ट्रैक करता है। जैसे कि how much learned we become, it doesn't matter if we are not Krishna consciousness. Like there was a government official, he was not allowing the Prabhupada for the carrying on the rituals. So ultimately the conclusion came, if we are not Krishna conscious, we are living like animals in dog society, and what is the use of that? So we really need to understand the purpose of life. हम कितना भी एजुकेशन गेन कर लें, कितना भी कुछ कर लें, बट इफ वी आर नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, so everything goes in vain. Thank you, Kanak Mataji. Amazing point. Yeah. Yes, Swati. वैसे तो सब कुछ कवर कर ही दिया, बट एक पॉइंट जो हमने लास्ट बुक में भी आई थिंक पढ़ा था, जिसमें प्रभुपाद यहाँ पे प्रभुपाद ने वो रिपीट किया है कि मटेरियल एक्टिविटीज में देयर इज टायर्डनेस इन्वॉल्व। हम कुछ भी कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम वी फील टायर्ड, बट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कभी ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ हमेशा ही फ्रेशनेस रहती है। तो जैसे प्रभुपाद जी बोल भी रहे थे कि
these devotees come after doing so many activities, Hmm. spiritual activities, they again come to me and say, what Prabhupada, what else can we can I do? do? Yeah, तो वो रहता भी है कहीं ना उल्टा कहीं ना चलता है ना हमेशा मटेरियल में। क्या स्पिरिचुअल हो गया कि एक्टिविटीज में। मटेरियल में रिटायरमेंट है, मतलब एक पॉइंट पे आके आप बोल रहे हैं कि भाई मैं तो जल्दी जल्दी कमा के 40-50 साल में रिटायर हो जाऊंगा, मतलब यू वांट टू टेक रेस्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो मच एग्जॉस्टेड। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी है, बट स्पिरिचुअल लाइफ एकदम उल्टा है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो एंथुसियाज्म बढ़ रहा है, मतलब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी से भी ज्यादा करना चाहते हैं। जैसे आज हम देखते हैं स्कूल में भी, जैसे जय पताका महाराज है या गुरु महाराज है या इतना सीनियर डिवोटीज हैं, they are doing more than their bodily capacity। उल्टा चलता है बिल्कुल, है ना। तो यस, सॉरी स्वाति, बट कंटिन्यू। बस यही पॉइंट डिस्कस करना था मुझे। सो मुझे भी बस एक पॉइंट वो डिस्कस करना है, बाकी तो सभी डिवोटीज ने कर लिया। एक तो स्टार्टिंग में है ना माम वर्ड, माम अनटू मी, तो मतलब ये जो वर्ड है ये लास्ट में एकदम यूज हुआ है। वैसे तो बीच बीच में भगवान कई बार बोले, एकदम लास्ट में फिर यूज होता है। 18 चैप्टर है जो वो फेमस श्लोका है जो सब डिवोटीज जानते ही हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो मतलब इसमें कैसा है कि जैसे हम लोग ऐसा सुनते हैं कि भगवान बोल दिए ना लास्ट में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, तो इसमें एक और कोई क्वेश्चन आता है। एक्चुअली कल ही एक भक्त कह रहे थे तो वहां से फिर मैं मुझे याद आया, मैं सोचा डिस्कस करता हूँ। तो उसमें ये आता है कि भाई भगवान जैसे अर्जुन को बोले ना कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं देख लूंगा अपने, तुम टेंशन मत लो। ना बोले कि ऐसा तो वो डिवोटी नहीं थे जो पूछ रहे थे, बट बोले कि ऐसा तो कोई वैसे भी पूछ सकता है ना कि भाई जैसे मान लीजिए दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, कहेंगे अरे तू टेंशन मत लेना यार मैं देख लूंगा, तू चल आगे बढ़। तो ये उस तरह से भी तो हो सकता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं, दूसरे फ्रेंड ने बोल दिया कि नहीं नहीं तू तू बढ़ना यार मैं देख लूंगा, तू बढ़। ऐसे भी तो हो सकता है ना। प्रोजेक्ट हाँ दीपक पूरा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे अर्जुन हाँ। कृष्ण को एज अ गुरु मतलब उनके सरेंडर होकर के गुरु मान करके वो ऐसा हुआ है, मतलब एज अ फ्रेंड नहीं बोल रहे हैं कृष्णा उनको, एज अ डिसाइपल और एज अ स्टूडेंट उनको बोल रहे हैं। यहाँ पे तो इसके सिनेरियो लिए फिर अलग हमें है कोई और पॉइंट वो निकालना सिनेरियो पड़ेगा। अलग है, फ्रेंड और फ्रेंड वाला। जैसे क्या होता है ना कि एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त पे ट्रस्ट करता है काफी, तो दूसरे वाला कहता है अरे पी लेना यार कुछ नहीं होता है, थोड़ा एक पैक तो लगा के देगी यार। उसने भी गुरु मान लिया, दूसरे वाला भी गुरु बन गया, उसने पीना सिखा दिया। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि भावावेश में आ रहा है क्या ये स्टेटमेंट, वो पॉइंट है। कोई बोल रहा है कि ये तो यारी दोस्ती, ये इशू को ये नहीं प्रभु आप कंप्लीट करिए ना, फिर मैं ऐड करूंगा इस पे थोड़ा सा। नहीं मैं तो ऐसे डिस्कस के लिए पॉइंट लेके आया हूँ, फिर मैं अपना ही पॉइंट रखूंगा, तो आप प्लीज प्रभु जी बताइए। मेरा अंडरस्टैंडिंग इसको ये था कि हम इस वाले जो 18.6 है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सर्वधर्म जो श्लोक की बात कर रहे हैं, तो वो कंक्लूजन कैसे बना गीता का, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस श्लोक इज कंक्लूजन। ऐसा तो कृष्णा ने बोला नहीं है, ऐसा अर्जुन ने बोला, मतलब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है उसके श्लोक से पहले वाले श्लोक में कि अब मैं कंक्लूजन बोलने जा रहा हूँ गीता का। और तो हमने ये मानने क्यों लगे, हम ये कंक्लूजन मानने क्यों लगे। तो ये सवाल मेरा भी उठा था, तो थोड़ा सा इसमें मैंने भी रिसर्च किया था, तो दैट आई बिलीव कि ये कंक्लूजन क्यों है और ऐसा ही कृष्णा ने क्यों बोला। तो हम इसको फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। ऐसा हम अपने जजमेंट्स भी पढ़ते हैं लॉ में, जैसे मैं पढ़ता हूँ जजमेंट, तो हम फैक्ट पढ़ते हैं और हेल्ड वाला पढ़ते हैं कि फैक्ट इसके और कोर्ट ने ये किया एट द एंड। तो सेम ऐसे ही है भगवत गीता के साथ कि फर्स्ट चैप्टर में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट चैप्टर थी कि फर्स्ट चैप्टर में कृष्णा ने what Arjuna is doing here, he is keeping morality over devotion। कि उन्होंने मोरालिटी रखी डिवोशन से ऊपर कि मेरे साथ मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए समाज में, ये वो नहीं वो तो ठीक है, सही बात है। लेकिन एट द एंड फिर इस श्लोक से आप मतलब फर्स्ट चैप्टर से आप कंक्लूड कर सकते हो कि कृष्णा मोरालिटी अर्जुन मोरालिटी को ऊपर रख रहे थे डिवोशन से। तो एट द एंड फिर ऐसा नहीं है कि फनाटिज्म नहीं है कि कृष्णा ने बोला कि मेरे को सब कुछ गिव अप कर दो। देन ही ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल, बीच में जितने भी 17 चैप्टर आते हैं 16 चैप्टर्स आते हैं कि व्हाई दिस सरेंडर टू मी, मतलब जो मोरालिटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट पहले स्टार्टिंग से बिल्ड किया कि व्हाट कृष्णा इज डूइंग
what he is trying to say और actually में होना क्या चाहिए, then we can, then it makes sense कि हाँ ये conclusion क्यों है गीता का, क्योंकि अर्जुना ने सारे आर्गुमेंट्स दिए सोसाइटी के कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, मोरालिटी के ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, बट उसका फिर सारा काउंटर करते हुए कृष्णा एट द एंड आते 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 फिर he has to say that कि you have to give up all your concoctions, mental concoctions and mental dharma. जरूरी नहीं है धर्मा जो सोसाइटी में चल रहा है वो भी एक पर्सनल भी हो सकता है, इंसान का कोई धर्म बना लिया उसने अपने मन में. You have to give up. You do not have to follow your mind. You have to follow my words, what I've tell you, what I've given so far. If you please, you please by that. Krishna is not forcing upon you कि it is not something you have to do this. तुमने मेरा सुन लिया सब कुछ, 18 चैप्टर तो 17 चैप्टर था, अब तुम्हें लगता है if you are willing, then only. वो पॉइंट है. हाँ, ये जो पॉइंट आप बताए ना, ये लास्ट वाला, ये मुझे भी लगता है. एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं तो कोई इल मोटिव होता है. जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरे को बोलूँ कि अरे पीना, ड्रिंक पी लेना यार, इसमें क्या हो गया पीना, अरे तो टेंशन मतलब मैं देख लूंगा. तो देयर इज सम मोटिव बिहाइंड द पर्सन हु इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज फ्रेंड. बट कृष्णा का स्टार्टिंग से ही पॉइंट वो रहा है कि ही इज अलूफ फ्रॉम फाइटिंग ऑल्सो. वो तो सारथी बने बैठे हैं, बोले मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं लड़ाई लड़ने वाला भी नहीं हूँ. फिर जब भगवत गीता भी स्टार्ट हो रही है उसमें भी भगवान यही बोल रहे हैं कि अपना बता रहे हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब तुम्हें मारना है तो मारो, वरना कोई और आके मार देगा. वाई? बिकॉज आई एम डिजायरिंग सो. तो कृष्णा का तो कोई मोटिव है ही नहीं. फिर लास्ट इसमें फिर बात आती है तो भावावेश में बोल दिया क्या ये स्टेटमेंट कि चलो ठीक है अलूफ तो है फाइट सबसे, बट लास्ट में ये था कि भाई डिस्कशन क्लोज करना है तो उन्होंने कहा यार तुम मारो मैं देख लूंगा. बट ऐसा भी नहीं है. मतलब इस श्लोक से पहले भी 66 से पहले भी 64 पे पहले भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें बहुत गुह्य ज्ञान देने जा रहा हूँ. तो 66 का जो भाव है वो पहले उसके 2-3 श्लोकों से क्लियर होता है कि एकदम से भावावेश में नहीं बोला है. पहले भगवान बोल रहे हैं कि देखो आई एम गोइंग टू गिव यू अति गुह्य ज्ञानम, जो बिल्कुल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ. और फिर 67 में भगवान बोले मुझे प्रणाम करो. फिर 66 में बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य. उसके बाद 67 और 68 में भगवान ये भी बोल रहे हैं फिर से कि देखो ये अति गुह्य ज्ञानम है, ये उन लोगों को मत देना जो मुझसे एनवी रखते हैं या जो मेरी डिवोशनल सर्विस नहीं करना चाहते हैं. तो जैसे हम ये जो स्टेटमेंट हम कई बार इस तरह से बोलते हैं ना, अरे चल कोई बात नहीं, तो इसमें तो भावावेश आ गया या सेल्फ मोटिव आ गया. वो दोनों ही इसमें नहीं दिखते हैं. अगर हम उसके पहले 1-2 श्लोकों पे जाएं और या फिर इस श्लोक के 67 1-2 श्लोक बाद पे जाएं 67-68 पे, ये बहुत ठहराव है इस श्लोक में. उसके बाद ही भगवान एकदम से बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई, मैंने तो तुम्हें जो देना है दे दिया है, नाउ इट इज योर डिजायर वट एवर यू वांट टू डू. तो उस सेंस में मुझे ऐसा लगता है भगवान का सेल्फ मोटिव ऐसा नहीं था, और साथ में कोई कन्विंस करने वाला भी पॉइंट नहीं था. सो इट्स लाइक बिल्कुल बहुत स्मूथ तरीके से दी गई है नॉलेज. फिर हम धीरे धीरे सरेंडर करते हैं तो पता चल ही जाता है कि इट्स नॉट कि ऐसे ही बोल दिया करके कृष्णा रियली एग्जिस्ट एंड द सरेंडर मींस समथिंग. करेक्ट है. एक पॉइंट और इसमें आता है, उसे हम कभी आपने डिस्कस कर लेंगे, ये मेरे भी रिसर्च का पॉइंट है तो आप लोग भी कर सकते हैं. जो वर्ड है ना व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो एक्चुअली व्रज का मतलब होता है गो, आना नहीं है पास में. तो जब भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो, मामेकम शरणम, तो मेरी शरण में आओ होना चाहिए ब्रज, बट उसका जो ट्रांसलेशन बन के आता है वो होता है गो. तो कभी आप लोग भी उसको देख सकते हैं कि उससे कैसे हम कनेक्ट करें. हम कभी डिस्कस भी कर लेंगे उसके बाद में. चलेगा ना सभी को? So we'll stop here now. ठीक है विप्रो? Yes, Suji, yes. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you everyone. Thank you, everyone. Hare Krishna, thank you for joining.